Dear students, our today's topic is applications of colloids. Different types of applications of colloids are there, and out of so many types of applications of colloids, one application is electrical precipitation of smoke, and this electrical precipitation is done with the help of a device, and that is called Cattrall precipitator. So I want to tell you first, whenever from the factories or from some brick fields, there are different types of chimneys are there, and continuously the polluted air that comes out, which contains the dirt particle, dust particle, carbon particle, and the different types of pollutants. And this polluted air, when comes out from the chimneys, that meets with the atmospheric air and pollutes it. So we use one type of device in the chimneys, and that is called Cattrall precipitator. If we use this Cattrall precipitator in the chimneys, then somehow we can reduce the concentration of these type of pollutant, and we can make the air fresh. So how this Cattrall precipitator works in the chimneys, that we will see first. This is the diagram of the Cattrall precipitator and how it works. First of all, we allow the polluted air to pass from this inlet. Since the smoke is the type of colloid, because already I have explained you the different types of colloids, out of which one is the aerosol, and the example of the aerosol is smoke, that contains the solid carbon particles and the different types of pollutant, and the dispersion medium here is the gas. And since it is a colloid, so all the particles which are present in the smoke, they must contain the same type of charge. Our purpose is to neutralize these charges and to convert these particles into the precipitate. So when this polluted air passes through this inlet, it comes in contact with this electrode. This is the high voltage electrode having 30,000 volt or more. So these colloidal particles, when come in contact with this high voltage electrode, then they get neutralized. If the particles they have the negative charge, then they come in contact with this and they get neutralized, and after neutralizing this, they convert into the precipitate, and all the precipitate particle they settle down at the bottom here. So जो हमारा मेन पर्पज़ है इसमें वो ये है कि कार्बन पार्टिकल्स और द डर्ट पार्टिकल्स और द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द स्मोक, हम लोगों को उसको न्यूट्रलाइज करना है, एंड आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन वी कन्वर्ट इनटू द प्रेसिपिटेट, एंड ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द प्रेसिपिटेट दैट सेटल डाउन एट द बॉटम, एंड फाइनली फ्रॉम एयर द फ्रेश एयर कम्स आउट विच डज नॉट pollute the environment. So this is the function and working of the Cattrall smoke precipitator. So factories and the brick fields, they must use this type of Cattrall smoke precipitator. With the help of this, we can reduce the concentration of the pollutant in the atmosphere. So this is the first application of the colloid. Now see the second application, and that is purification of drinking water. What is in this? The water obtained from the natural sources often contains the suspended impurities. Alum is added to such water to coagulate the suspended impurities and make water fit for drinking purposes. What is happening in this? Actually, the drinking water hai that contains so many type of suspended impurities, and these suspended impurities also they have the charge on them. When the fitkari is added into this, then fitkari when dissolves in the water, it breaks into the different types of ions, positive ions and the negative ions, and these positive and negative ions of the fitkari or alum that neutralizes the impurities or the suspended impurities which are present in the water, और उसके बाद जो impurities होती हैं they convert into the precipitate and they settle down at the bottom. तो अगर हमारे घर पर कहीं पर वाटर आ रहा है और उसमें कुछ सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज है, एंड इफ वी आर एडिंग द एलम और फिटकरी इन दैट वाटर, तो फिटकरी क्या करती है, उन सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज को कोगुलेट करती है, जिससे जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज हैं दे सेटल डाउन एट द बॉटम,
or with the help of the decantation method we can get the pure water. Third application of the colloid is medicines. Most of the medicines are colloidal in nature. For example, Argirol is a silver sol used as an eye lotion. Colloidal antimony is used in curing Kala Azar, and the colloidal gold is used for the intramuscular injection. So these are the different applications of the colloidal solutions. One question that had come in the exam one time that I have written separately here: colloidal medicines are more effective because they have the large surface area and therefore easily assimilated. What is the mean of this? Many of the medicines they are colloidal in nature, and since they are colloidal in nature, so they can be absorbed, they can be assimilated in the body easily. So that is one of the application of the colloid. So those medicines which are colloidal in nature can easily be absorbed and can easily be assimilated in the body as compared to the other medicines. Next property, and that is photographic plate and films. Nowadays digital cameras and the digital mobiles they are running and we are capturing the photos, but before some time, approx 8 or 10 years before, camera roll that was very much common, and the camera roll, what was there, this was the camera roll, and thus in that camera roll there is a coating of some chemicals on the surface, so that easily the films or the images of the objects they can be taken out. तो इस पे जो substance की coating होती थी that was also colloidal in nature. So just see, photographic plates or films are prepared by coating and emulsion. Emulsion is also a type of colloid. Out of 8 type of colloid, one type is emulsion, in which the liquid and liquid they mix into each other. So coating of emulsion of the light sensitive silver bromide in gelatin over glass plates or colloidal films. तो इस पे जो coating होती है that is also a type of colloid. Next application of the colloid is rubber industry. Latex is a colloidal solution of rubber, particularly which are negatively charged. Latex is a type of natural substance which is obtained from the rubber tree. Rubber trees that releases one white substance, and that white substance is called latex, and this latex particles are negatively charged, and afterwards we are treating with some chemicals, and उसके बाद में इसको coagulate करते हैं, ठीक है. If there is negatively charged, then it absorbs the positively charged chemicals on its surface and get coagulated, and after the coagulation the normal rubber we may get, which can be used for the different types of purposes. नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द कोलाइड इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. इसमें पेंट्स है, इंक्स है, सिंथेटिक प्लास्टिक, रबर, ग्रेफाइट, लुब्रिकेंट, सीमेंट एक्सेट्रा आर ऑल कोलाइडल सॉल्यूशंस. दे ऑल आर इन द कोलाइडल फॉर्म. So these are the 6 type of applications. One more questions had come in the exam, and that separately I have written, that is tanning. And what is the tanning? Animal hides, जो जानवरों की खालें होती हैं, सो दे आर आल्सो इन द कोलाइडल फॉर्म. तो एनिमल हाइड्स, जानवरों की खाल को हम लोग हाइड्स कहते हैं. एनिमल हाइड्स आर कोलाइडल इन नेचर. तो जो नॉर्मल हमारी हाइड होती है दैट इज वेरी सॉफ्ट, बट इफ वी ट्रीट विथ सम केमिकल देन इट कन्वर्ट्स इनटू द हार्ड हाइड, एक टफ हाइड में कन्वर्ट हो जाती है, एंड दैट कैन बी यूज फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्पजेज. जैसे जो हमारी स्किन होती है एनिमल्स की वो सॉफ्ट होती है, लेकिन हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स विच वी आर मेकिंग दैट इज मेड बाय द हार्ड लेदर. तो सॉफ्ट लेदर को हार्ड लेदर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, दैट प्रोसेस कॉल्ड टैनिंग. तो फॉर दैट पर्पज व्हाट वी आर डूइंग, दैट एनिमल हाइड्स दैट कैन बी सोक्ड in a chemical, and that is called tannin. And what is the tannin? Downside it is written, tannin is obtained from the plants. It is a mixture of derivatives of polyhydroxy benzoic acid. जो हाइड होती है that is actually the positively charged, and when we are soaking this into the tannin,
then tannin is the negatively charged and both they coagulate to each other, and after the coagulation the soft leather that converts into the hard leather, and this process is called tanning. So must remember and keep in the mind the process of converting a soft leather into the hard leather after treating this soft hide with the different types of chemicals, so that the coagulation process takes place and we may get the hard leather. One more question usually come in the exam. Delta is generally formed when the river meets the ocean. Suppose this is the ocean and the river water that falls in this. So when the river water falls and meets with the ocean water, a type of triangle is formed this like this, and this triangle that is called delta. So why the delta is formed and what is the reason behind this? So that is the separate question. Delta is generally formed when the river meets the ocean. See, river water is a colloidal solution of negatively charged silicate. जो रिवर वाटर होती है उसमें सिलिकेट्स होते हैं एंड दीज सिलिकेट्स आर मेनली नेगेटिवली चार्ज, और जो सी वाटर होता है उसमें मेनली आपका सोडियम क्लोराइड होता है एंड विद दैट बिसाइड दैट वन सम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस आर आल्सो देयर. तो ये जो आपकी रिवर है दैट कंटेन्स सिलिकेट्स, और ये जो आपका ओशन है दैट कंटेन्स द कैल्शियम +2 एंड मैग्नीशियम +2 आयंस. तो नेगेटिवली चार्ज एंड पॉजिटिवली चार्ज आयंस दे स्टार्ट कोआगुलेटिंग टू ईच अदर, और जब दोनों एक दूसरे को कोआगुलेट करते हैं तो जहाँ पर रिवर वाटर मीट्स द ओशन वाटर वहाँ पर एक कोआगुलेशन हो जाता है, थक्का जमने लगता है, और उस थक्के की वजह से दैट पोर्शन where the river water meets the sea water, a type of triangle is formed this way. This type of triangle is formed and that is called delta. This is the remaining part of the page 5, effect of different types of factors on adsorption. जिसमें one factor I have already explained you, that is effect of pressure on adsorption. और effect of pressure में I already explained you that increasing pressure increases the process of adsorption, और एक certain limit के बाद जो adsorption होता है that becomes independent to the pressure. अब now if I ask to you, suppose this is the solid surface and on this we are carrying out some adsorption process. Whenever the adsorption process goes on, that also goes on with two ways, either by physisorption or by chemisorption. Whether it is physisorption or it is chemisorption, always a type of bond is formed. हमने आपको पहले ही बताया था जो physisorption है उसमें weak bonds are developed, but in the chemisorption the strong bonds are developed. और whether it is weak bond or it is strong bond, a type of heat or energy is liberated. क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कई बार कि whenever a bond is formed, always the heat is liberated or the energy is liberated, energy is evolved. जितना बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, इसीलिए जो फिजिक्स ऑप्शन है उसमें कम एनर्जी रिलीज होती है और जो केमिज ऑप्शन है उसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है. अब द प्रोसेस इज गोइंग ऑन एंड वी आर कैरिंग आउट द एड्सॉर्प्शन प्रोसेस. अब हम इसमें क्या करते हैं, वी मेक सम चेंज और हम इसको नीचे से हीट कर देते हैं. देन व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फिजिक्स ऑप्शन? फिजिक्स ऑप्शन में हमने आपको बताया था कि अगर आप इसको हीट कर देंगे तो जो प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन है दैट विल डिक्रीज, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज वेरी वेरी वीक. और व्हेन वी आर हीटिंग फ्रॉम द बॉटम देन द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस. जो एड्सॉर्प्शन हो रहा है वो एड्सॉर्प्शन या तो होगा नहीं और जो हुआ है वो भी एस्केप होना शुरू हो जाएगा. एंड दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड एंड कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ Le Chatelier प्रिंसिपल. सी दिस equation and I have already explained you in the 11th class the Le Chatelier principle. See what is happening in the adsorption process. This is a solid adsorbent जिस पर हमें adsorb कराया जाता है और ये हो गई हमारी गैस. The gas is adsorbed on the solid adsorbent. ये हो गया आपका adsorbate और ये हो गया आपका adsorbent. और जब गैस is adsorbed on the solid surface the heat is liberated. This is the heat और दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे, solid oblique gas. ये आपका एड्सॉर्प्शन हो गया और ये आपकी हीट रिलीज हो गई. इट मीन्स वेन एवर द एड्सॉर्प्शन इज गोइंग ऑन ऑलवेज द हीट इज बीइंग लिबरेटेड. और जो फॉरवर्ड साइड की प्रोसेस है वो हमारी एक्सोथर्मिक होती है.
अब एट द सेम टाइम हम इस प्रोसेस को क्या करेंगे, नीचे से हीट कर दें। अब जब हीट करेंगे तो ली टेलियर ने बताया था कि व्हेन वी आर हीटिंग ए प्रोसेस, रिएक्शन स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दैट साइड टू विच साइड द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। तो फॉरवर्ड साइड तो आपका एक्सोथर्मिक है, लेकिन जो बैकवर्ड साइड है वो आपका एंडोथर्मिक हो गया। इट मीन्स जो हमारी प्रोसेस है वो बैकवर्ड साइड में जाएगी। तो फॉरवर्ड साइड में हमारा हो रहा है एडजॉर्प्शन, तो बैकवर्ड साइड में हमारा होगा डिसऑर्प्शन। और डिसऑर्प्शन का मतलब होता है दैट इज सेपरेटिंग आउट द गैस एंड सॉलिड। तो हमारा जो प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन है दैट विल डिक्रीज। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड। तो डाउन साइड इट इज रिटन अकॉर्डिंग टू ली टेलियर प्रिंसिपल, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट इज गैस इज रिलीज्ड फ्रॉम द एडजॉर्ब सरफेस। दिस ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू टैनिंग। और एक दो पॉइंट और हैं, ये देखिए एक्स्ट्रा में वन थिंग आई हैव गिवन। एक्चुअली जो हमारे कोलाइड्स होते हैं दे हैव सेम टाइप ऑफ चार्ज, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। सम स्पेसिफिक और important types of colloids I have given in this table, and in the NCERT also some examples, these examples are given. So this you learn by heart.